This is the great pleasure of introducing our resource person, Dr. Nidhi Gupta ma'am. Dr. Gupta ma'am is an academician and a leader in her field, currently serving as a state coordinator with Jan Abhiyan Parishad. She holds a PhD from Schools of Management Studies, University of Hyderabad, specialization in the area of marketing, research, soft skills, entrepreneurship, and vocational education and training. She has 18 years of experience in teaching, research, and industry. She has won 4 papers award in international conferences and contributed 15 book chapters in edited volumes. She received an International Research Silver Award for her work. She has also successfully managed 3 government-funded projects and serves as a resource person for the workshop and training program. Please join us in giving a warm welcome to Dr. Nidhi Gupta ma'am. So whether it is simple first generation analysis tools like SPSS, what at our time we were doing with that, or it is SEM, structural equation modeling. There are many softwares, Laserly is there, MOS is there, SmartPLS is there. So few things we should understand before starting off our analysis with the use of software. Try to bring all those things with you. Okay, we'll begin with. So what do you understand with structural question model? As I'm assuming that since this workshop is on structural equation modeling, so you all must be aware of multiple regression, factor analysis, ANOVA, everything. So with this assumption, I'm starting with directly with structural equation modeling. If I find anywhere, you are not getting the concept, we'll also learn those concepts. So don't worry about that. Like we are not only discussing here structural equation modeling, all the concept what you want. Okay. So what do you understand with the structural equation first? With the offline, I can ask. With the online, okay, they can message. As you can see, structural equation modeling is a multivariate statistical tool. Multivariate means where n number of indirect variable and or independent variable or dependent variables are available, and where you are understanding the relationship between the independent variable and dependent variable, many connections together at one time where you are analyzing. That is structural equation model. Okay, means two things will be there. First thing, it is the combination of factor analysis and the regression analysis, where you are seeing the relationship between the independent variable and the dependent variable. So there will be combination of factor analysis and multiple regression. So what is factor analysis? It is of again two type, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis क्या होता है? Say suppose if I want to study for uh, purchase behavior of mobile phones among the population, then you must be analyzing the purchase behavior. You cannot predict the purchase behavior directly, right? So you are predicting this variable with the help of other items, which can define the behavior. Because few things like which are latent, which cannot be directly measured, like attitude, like happiness. If I say you all are happy today here, so some may say no, I'm not happy. Some may say yes, I am happy. Some may say okay. So you cannot predict the happiness directly with anything. So how you will measure the happiness? With the help of items, with the help of indicators. So those indicators will assume the value of happiness. Like मैंने बोला आपसे कि आप यहाँ पर क्योंकि कुछ सीख रहे हो इसलिए खुश हो, या आप आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे से. तो you are making few statements to describe in this scenario the happiness can be different in different settings, right? तो यहाँ पे when you are predicting something,
So the happiness is a latent variable, or attitude is a latent variable there, which can be predicted with the help of some indicators on in the particular setting. So you will define those indicators, right? When you will define those indicators, that means that there would be some relationship between those indicators and the latent variable, which is your construct, which will be your construct. So this will help in measure. Next things, what came is analysis. It is used to analyze the structural relationship between measured variable and latent construct. Measured variable and latent construct. Measured variable कौन से हुए? What are the measured variable? All the indicators which are constructing one latent variable, which are constructing it, which are explaining that variable. Like if in certain settings आप purchase behavior देख रहे हो, तो that purchase behavior will be explained by some indicators. Those indicators are measured variable. Those are measured variable, and these measured variable explaining something, this will be latent variable, or you can say this will be your construct. It is making one construct. तो यहाँ पे दो हो गए, latent variable और construct. Further, जब हम structural equation modeling करते हैं, तो it will provide you a summary, model summary, where you can see that the data set you have given is perfect or fit to that particular situation. So what are the all component you got in the structural equation modeling? Major component क्या होंगे इसमें? Major components क्या होंगे? First is factor analysis. Second is regression analysis, multiple regression analysis. Multiple regression, you all know, no? What is multiple regression? Where you are using, what is multiple regression? Relationship between many independent variable on the dependent variable. Multiple regression. So multiple regression will be there, measured variable, which you are going to with the help of this, you are going to observe something. Na? Latent variable, जो hidden variable, which cannot be expressed directly. You need some measured variable or the items to explain those, and then goodness of it, where you are explaining the complete model, whether the data set or points you have given are fit to the situation, or these are representative to the population. Okay. Now, what are the features of structural equation modeling? When we talk about the features, because we are starting with structural equation modeling, workshop is on structural equation modeling. What are the features? Now this is the generation which is using structural equation modeling. Earlier at our times, we were using first generation of analysis, which is SPSS, or sometimes, manually. Before us, even people were doing manually. So we were blessed that we were using SPSS as a tool to compute everything, to analyze the data. So that was first generation, where we are doing with the help of SPSS, we were doing ANOVA, we were doing chi-square test, or linear regression, or multiple regression, and stepwise regression, whatever you can. So that was first generation of analysis. Now it comes to the second generation, where you are analyzing the movement of variables. Okay, where you can say covariance, है ना, movement structure of the covariance, जहाँ पे you can analyze those, because one factor cannot affect. It is not like only one factor at one time is affecting something. There may be other factors also. Like, say suppose in this setting, when we are discussing on some topic, there are many factors which can affect not only the delivery of my lecture, but also the other variable present here can affect the scenario. So learning, how can it affect the learning? Maybe आपका disconnect हो जाए internet, तो you can skip. अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत struggle कर रहे थे to showcase our PPTs and all. So this can affect.
The other thing is maybe जो आपके साथ में बैठे हुए हैं या आपको कोई फोन कॉल आ जाए या कोई आपके साथ में बैठा हुआ है वो बात करने लगे, so you can miss. So learning can be affected by at the same time by so many things. There are many variables which are affecting learning. तो यहाँ पे estimation of multiple interrelated relationship which can affect. अब हम कहेंगे सिर्फ पढ़ाई, if say suppose I am, because you all are students, if I am saying that your scores will be affected by how much you are studying, is that so? Is it the, it is only the parameter which can measure your scores कि आप कितनी पढ़ रहे हो? नहीं या हाँ? नहीं ना? कर सकते हैं? सिर्फ आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपके स्कोर इस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ इसी पर डिपेंड करते हैं या देयर आर मेनी अदर वेरिएबल्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली अफेक्टिंग दिस? क्या क्या हो सकते हैं? पीयर्स, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली सिचुएशंस, और क्या हो सकता है? resources availability. So there are many, you know, at the same time there are many relationships available which affect the result of or which affect the outcome. तो आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? फीचर्स क्या हो गए? आप एक ही समय में कई सारे वेरिएबल्स का एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका इफेक्ट देख रहे हैं, क्या वो सेम लाइन में चल रहे हैं या नहीं, है ना? देन रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स है जिनको आप बोलते हो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लाइक इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ फ्यू इंडिकेटर एक्सप्लेन. कैसे? आपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कुछ एक पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे, यदि ये पास करते हैं ये पैरामीटर तो ये बंदा इंटेलिजेंट है. इमोशनल क्वेश्चन के कुछ पैरामीटर्स डिफाइन है, तो यदि वो उसको पास करता है तो आप उसको EQ स्कोर दोगे या IQ स्कोर दोगे, राइट? तो जो अनऑब्जर्व्ड है दैट आल्सो यू कैन प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. अर्लियर क्या होता था, जो SPSS जब आप लोगों ने यूज किया होगा होपफुली, जो हम रिग्रेशन एनालिसिस करते थे उस समय हाउ वी हैव टू मेजर जो भी आउटपुट या एंडोजीनियस वेरिएबल कह लें आप या फिर आउटकम वेरिएबल कह लें या डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट आल्सो वी हैव टू यू नो मेजर विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स दोज स्टेटमेंट्स और फिर उसकी वैल्यू निकालना एंड देन सी द रिजल्ट. या at the same time you can you know put all the relationship with the indicators and the same time you can check the dependence on the other variable. तो की टाइम में जो आपका एक कंस्ट्रक्ट है दैट कैन प्ले टू रोल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी रोल प्ले करता है एक ही टाइम में डिपेंडेंट वेरिएबल का भी रोल प्ले करता है. पर जब आप SPSS में रिग्रेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ एक लीनियर रिग्रेशन बताता है, एक ही रिलेशनशिप आपको शो करता है. यहाँ पे आप मल्टीपल रिलेशनशिप आप मेजर कर सकते हो विद द यूज ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन. फिर इफ देयर इज एनी एरर सो यू कैन करेक्ट दोज एरर टू फिट योर मॉडल and finally you can define your model. But structural equation modeling is always depend on some theory, whereas PLS theory पर depend नहीं है. जो आप स्मार्ट PLS यूज करते हैं वहां पे थ्योरी की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर एक्सप्लोरेटरी. बट फॉर कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग देयर यू नीड सम थ्योरी. जो भी आप मॉडल बनाएंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम थ्योरी which is already being tested. जो भी हमने कंस्ट्रक्ट लिए हैं वो कहीं किसी स्टडी में टेस्टेड होने चाहिए, उसका कोई रिलेशन प्रूव होना चाहिए, दोज यू कैन ओनली टेक. तो वहां थ्योरी होती है. जो भी आप मॉडल बनाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन सम थ्योरी. यू आर डिजाइनिंग सम मॉडल बेस्ड ऑन सम थ्योरी, बट in the smart PLS you are designing the model based on your assumptions only. That doesn't require any theory. You can explore that. ये फैसिलिटी आपको कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में नहीं मिलती देखने में. फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कंबाइंस टू मल्टीवेरिएट प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो फैक्टर एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस को साइमल्टेनियसली इट कंबाइंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड कॉजल मॉडल. कॉज एंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. व्हेन टू यूज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग? when you have complex research, आपको एक समय में you have to check many relationship together.
आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स कुछ आपने मॉडल बनाया, दैट यू हैव टू चेक, और मल्टीपल एसोसिएशन बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, और यूजुअली व्हेन there is some mediator or moderator. Mediator and moderator means, say suppose I have taken an example of mobile purchase, है ना, purchase behavior of about the mobile. तो हमने यदि purchase behavior of mobile we are measuring, तो there can be one moderator or mediator. Moderator क्या हो सकता है उसमें, if we are measuring purchase behavior, तो moderator क्या हो सकता है, there may be gender can be moderator. How gender can be moderator? Purchase behavior of mobile by female can be different from the male, हो सकता है. Then again, what other variable can be can play as a moderator role? Demograph, huh? Android and iOS, that's okay. That is not moderator actually. Moderator purchase behavior, that is your requirement. Yeah, that is your requirement which you need, what you need, Android chahiye ya iOS chahiye. But the moderator in the behavior, purchase behavior, maybe your income, your education level, gender. So these demographic can affect. यदि आपका income, आपकी expenditure power आपको allow करे, then you can go for iPhone as well. नहीं allow कर रही तो आप उसे नीचे वाला version लोगे. So your income can play as a moderator role. Purchase behavior of the consumer will be different in the different age group. आप जब adults पे, old adults पे जाएंगे तो they use mobile only for few social media things like आपको WhatsApp चाहिए या WhatsApp या Facebook, ज्यादा से ज्यादा, है ना, और उनको YouTube चाहिए और वॉइस क्वालिटी ठीक होनी चाहिए. दे डोंट लिसन टू सॉन्ग और समथिंग, उनको बहुत ज्यादा स्पीकर और उसका वो नहीं है, और मैसेजिंग उनका ज्यादा नहीं है. तो व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. तो विद द एज आल्सो the requirement will differ. It plays a role of mediator, sorry, moderator. Then again, there, if you want to see the mediator role in presence of something, if the purchase behavior changes, say suppose अभी दिवाली आया या some occasion is there, you wanted to purchase, आपके घर में शादी आई, which is not an occasion, but हाँ ठीक है, आपके घर में कुछ function आया, now your purchase behavior will be different for dresses, for something else. So this is mediation with the, in the presence of something, if the behavior is changing. So mediating effect is there or moderating effect is there. If you want to measure that moderating or mediating effect, then you need a structural equation modeling, right? Latent concept, if you want to explain some latent concept which cannot be directly explained by anything, then you need structural equation modeling. जैसे happiness हुआ, quality of life हुआ, like if I'll say, yeah, quality of life can be defined by health or nature, natural and living environment, work. Then again, health can be defined further, divided by mental health and physical health. Again, it can be divided. So directly, you cannot explain quality of life directly. There are n number of parameters which simultaneously affecting the quality of life, right? So with the help of structural equation modeling, you can check all the parameters relationship at once. Where if you are going for simple regression, you cannot check all these parameters simultaneously. The effect of all these parameters. आप step-wise regression करेंगे, आप ज़्यादा multiple regression करेंगे. But at the same time, if your independent variable is playing the role of dependent variable, that facility is not available with the simple regression. So it is clear that SEM estimate multiple and interrelated dependent in a single analysis, right? Now it examines two things: measurement variable and structure. Structure is what?
which provides you conceptual framework, which is based on some theory. There is some theory जिस पर बेस है आपका conceptual framework. Like मैंने कहा leader effectiveness. If I wanted to check leader effectiveness, it is depend on decision making power. It will be dependent on ability to motivate. It will be dependent on communication skill, right? यदि ये तीनों पॉजिटिव हैं, then you can say leader is effective. यदि उसकी communication power excuse me, हाँ, hello, बेटे क्लास के बाद बात कर लो, पता नहीं. Sorry. Yeah. So if you want to check leader effectiveness, you need to have all these things in you. तो आप कहोगे leader is effective. If anything is lacking, then you can say leader is not effective. And further, decision making again depends on some other variables. So this is based on theory. Theory has proven that effectiveness of leader depends on these three parameters. So you will support your whatever the factors you are taking or the construct you are taking, you will take a support of theory. On what basis you are taking this, or the indicators which are explaining that particular latent variable, you have to support those also. Say suppose in some research work they have taken decision making and the indicators to explain decision making. So you have to take the same if you are taking decision making as a construct, you have to take same indicators. You can propose new indicators, you can propose, but then covariance based will not be there. You have to first check. आपको EFA लगाना पड़ेगा, exploratory factor analysis, फिर आप confirmatory factor analysis लगाओगे, and then again you will check on, because you are making new theory, right? तो आप indicators define कर सकते हो, आप even construct भी define कर सकते हो, आप खुद से अपना एक construct बना सकते हो और उसके indicators भी define कर सकते हो, but covariance based में नहीं होगा. Items, indicators means items, और construct आपका जो इंडिकेटर एक्सप्लेन कर पा रहा है, latent variable, that is construct. Okay. Where were we? Okay. Conceptual framework which is based on some theory. SEM test uses theory and जो आपका not explore relationship or reveal the model, right? SEM provides more accurate estimates of parameters, which you like. If there is some error, you can correct that error based on the model. If your data set is not fit in the model, you can go and correct your data set and then again retry with the model. So this facility is also available. Now next thing, first thing was the structure which we are getting from the structural equation modeling. The other thing is latent variable or the construct, right? आपको मिल रहा है constructs which are dependent or independent involved in the analysis, जो unobserved latent factors हैं, which should be based on some theory. And these can be of types, independent or dependent. Independent means exogenous construct or dependent means endogenous construct. मैं आपको एक if it is saved, I'll show you.
Is it visible? Yeah. These are indicators, right, which are representing this construct, latent variable. Suppose it is price. It is price. Price is defined by these three indicators, P1, P2, P3, where you have taken some statement to define price in your setting where you were in which you are doing your work. तो वहां पे आपने प्राइस का क्या डेफिनेशन दे रखा है, that will be explained by these three indicators. Okay. Similarly, location. I was checking store patronage behavior is based on price and location. Price, that what they are offering, and the location. If the location is nearby, maybe the patronage to the particular mall or store will be high. Okay. तो मुझे ये check करना था in this setting. Store patronage, you cannot directly explain, ये direct variable नहीं, it is a latent variable. It can be explained by some of the indicators. So there are indicators which I have. अब इसमें which is independent variable, which is dependent variable? अभी इसमें तो मैंने कोवेरियंस यूज कर रखा है. I'll show you how you will wait. जब आपका एरो लेटेंट वेरिएबल से दूसरे कंस्ट्रक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज जहां से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज एक्सोजीनियस वेरिएबल. एंडोजीनियस वेरिएबल जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है या जिसका इफेक्ट हमें उस पर दिख रहा है, जिसकी तरफ आपका एरो जा रहा है, दैट इज एंडोजीनियस वेरिएबल. यहाँ पर यदि मैं ये इंडिकेटर्स की बात करूं, तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडल. ये इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस किस स्ट्रक्चर इक्वेशन ऑफ इट टर्म्स. हाँ, exogenous is equal to dependent variable. Endogenous is dependent variable. Exogenous which exhibit their effect on something, that is exogenous. यदि आपको लगता है कि इस क्लास का इफेक्ट आपके रिसर्च स्कॉलर्स पे आएगा, तो एक्सोजीनियस क्या हुआ, एंडोजीनियस क्या हुआ, जिस पर इफेक्ट आ रहा है विच इज डिपेंडेंट, है ना. और एक्सोजीनियस क्या हुआ, जिसका इफेक्ट आ रहा है. तो यदि हम ऐसे सेटिंग में देखें जहां हमें नहीं पता विच इज एक्सोजीनियस एंडोजीनियस, तो जहां से आपका एरो ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से निकल रहा है, दैट इज एक्सोजीनियस वेरिएबल. और जहां जा रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज एंडोजीनियस वेरिएबल, डिपेंडेंट. इज इट क्लियर? जो आप बोलते हैं ना y is equal to a plus bx, सिंपल रिग्रेशन है. y is डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू a आपका कांस्टेंट हुआ प्लस bx, x1 x2 x3, there can be many or there can be one dependent variable. X is a independent variable, y is a dependent variable, right? Here also exogenous construct are the latent multi-item equivalent to independent variable. These are equivalent to independent variable, but these will be defined by some indicators. ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली नहीं बोल रहे, बट दीज आर एग्जिबिटिंग देयर प्रॉपर्टीज टू समथिंग. तो वहां पे आप ये मल्टीपल मेजर्ड है, बिकॉज देयर आर इंडिकेटर्स, मेनी इंडिकेटर्स कैन इज एक्सप्लेनिंग वन वेरिएबल और वन कंस्ट्रक्ट. तो इसलिए यहाँ पे आप इसको एक्सोजीनियस बोल रहे हैं. एंड सिमिलरली एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट आर द लेटेंट मल्टी आइटम्स इक्विवेलेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल. These constructs are determined by factors within the model. Multiple measured, यहाँ भी multiple measured होगा, will be explained denoted by y. जैसा आपने SPSS में देखा ना, y is equal to a plus bx. तो bx1 bx2 जो भी आपको n नंबर तक लेना है, that is y is dependent variable और x is independent variable.
Now the construct. What? Yeah. Before running to means before preparing, not before. If you have some conceptual framework in your mind, that means you must be having some exogenous variable or some endogenous variable. There you need to take a support of the theory and define that these particular latent construct are having impact on the other construct, right? तो कंस्ट्रक्ट क्या हुए, दो तरह के हो गए, एक्सोजीनियस हो गए, एंडोजीनियस हो गए, which are defined by some indicators. These are the indicators, right? हाँ, question, statements, items, कुछ भी आप कह सकते हैं. Now, how many models are there in the structural equation modeling? There are two type of model, inner model and outer model. हम इसको देख लेते हैं. इनर मॉडल एंड आउटर मॉडल. इसमें इनर मॉडल क्या हुआ, इसमें इनर मॉडल हुआ ये. मेरे पास कुछ इंडिकेशन नहीं है दिखाने के लिए. दिस इज आउटर मॉडल. तो यहाँ पे आपके कितने इस फ्रेमवर्क में आपके पास कितने मॉडल हैं? दो, आउटर मॉडल एंड इनर मॉडल. अब कितने आउटर मॉडल हैं? आउटर मॉडल एक है और इनर मॉडल, आउटर मॉडल दो हैं आपके पास. एक आउटर मॉडल और ये दूसरा आउटर मॉडल. क्यों? क्योंकि इसमें दो मॉडल हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चरल मॉडल, दूसरा मेजरमेंट मॉडल. दो मॉडल होते हैं. तो मेजरमेंट मॉडल यहाँ पे कितने हैं? यू हैव 3 मेजरमेंट मॉडल, 1, 2 एंड 3. देखो मैं आपको बताती हूँ. इसमें यदि हम मेजरमेंट मॉडल की बात करें तो यू हैव 3 मेजरमेंट मॉडल. नहीं, ये आउटर मॉडल है. These are outer model. When I have construct के बीच में relation है, then you have 2 outer models, right? But outer model में भी you have measurement model, right? और structural model means inner model. Structural model कौन सा है इसमें? Structural model है ये, where price and location is having impact on stored patronage. है ना. हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट देख रहे हैं वो है इनर मॉडल. दिस इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल मॉडल क्लियर हुआ? यू हैव टेकन सम कंस्ट्रक्ट, राइट? आपने एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क बनाया है. मैंने आपको अपने इसमें बताया था. You have, based on some theories, you have defined some construct. There are some construct and you linkages those construct. Thank you. Yeah, sorry. Okay, based on theory, you have got few variables, or you can say construct. एक आपका डिसीजन मेकिंग मिला, दूसरा एबिलिटी मिला, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल मिला, विच आर एक्सप्लेन हैविंग इम्पैक्ट ऑन लीडरशिप इफेक्टिवनेस. ये आपको एक फ्रेमवर्क मिला. हमने और डिसीजन मेकिंग के लिए भी वी हैव सम अदर वेरिएबल्स टू डिफाइन. मतलब इनका भी इस पे इम्पैक्ट है, राइट? एंड दीज वेरिएबल may be having some, for defining these you will be having some indicators, right? तो ये जो मॉडल है, सिर्फ ये मॉडल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडल. द मेन मॉडल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मॉडल. सिमिलरली
मैम फुल स्क्रीन में पुट कर देना स्लाइड शो मोड में इसको मैम पीपीटी को मैम अच्छा तो फिर नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ अभी आपको। मैम वो क्लियर दिख नहीं रहा है स्क्रीन। अच्छा पीपीटी मोड पर राइट, दिस इज स्ट्रक्चरल मॉडल, जहां पर आपने यू हैव आइडेंटिफाइड सम कंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्ट हैज मल्टीपल लिंकेजेस। ये जो आप फ्रेमवर्क बनाते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल मॉडल। ये स्ट्रक्चरल मॉडल है, ये भी स्ट्रक्चरल मॉडल है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल मॉडल, राइट, वेयर some constructs are there and having some linkages with each other, having effect, direct, indirect effects. That is structural model. Okay, and what is measurement model is उस कंस्ट्रक्ट को जो डिफाइन कर रहा है, उस कंस्ट्रक्ट को जो डिफाइन कर रहा है, उस कंस्ट्रक्ट को इंडिकेटर्स डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज ओनली measurement model. So in this setting you have how many measurement? 1, 2 and 3, because this construct is defined by these indicators. This construct is defined by these indicators. So you are measuring construct, तो ये measurement model हो गया। और जितने भी measurement model हैं वो क्या होंगे? outer model। और inner model क्या होगा? structural model। clear? right, अभी हम will move forward। yeah, we were here, right? Measurement model represent the theory that specify how measured variable come together to represent the theory. Here you will get two kind of models. First, again measurement model में आपको मिलेंगे दो मॉडल, रिफ्लेक्टिव मॉडल और फॉर्मेटिव मॉडल। रिफ्लेक्टिव क्या होंगे? व्हाट आर रिफ्लेक्टिव मॉडल्स? आप बताओ इसमें। हाँ, एरो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो रिफ्लेक्टिव क्या, कौन सा मॉडल रिफ्लेक्टिव मॉडल है? जब आपका एरो यहां से इंडिकेटर्स को बना रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टिव मॉडल, है ना। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? फॉर्मेटिव मॉडल। फॉर्मेटिव मॉडल क्या होगा? दिस प्राइस एंड दिस लोकेशन हैज इम्पैक्ट ऑन दिस। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल को, ये दो इंडिपेंडेंट और एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं, इम्पैक्ट शो कर रहे हैं, दिस इज फॉर्मेटिव, देयर इज अ फॉर्मेशन, है ना। और रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आउटर मॉडल्स आर मेजरमेंट मॉडल ऑफ इज ऑफ टू टाइप। हाँ, वही आउटर मॉडल कह सकते हैं। आपके सिर्फ समझने के कि दो तरह के मॉडल होते हैं, मैंने कहा इनर और आउटर, सो दैट यू विल रिकॉल। इनर क्या है? जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, जो स्ट्रक्चर है वो इनर है, और जो हम मेजर कर सकते हैं वो आउटर है, दैट इज आउटर। अब मेजरमेंट मॉडल में आप, मेजरमेंट मॉडल जो है वो दो हो गए, रिफ्लेक्टिव हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, स्ट्रक्चर ये है इनर मॉडल, बट आप इसको मेजर कर रहे हैं ना। मेजरमेंट मॉडल जहां पर आपके एरोज निकल के बाहर जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन देख रहा है और ये आपका फॉर्मेशन दिखा रहा है। जो रिफ्लेक्टिव, जब एरो आपके कंस्ट्रक्ट से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट मॉडल हो गया। और जब हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन दिस, तो क्या हुआ? फॉर्मेटिव हुआ, है ना।
किसका? फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आगे चलते हैं, है ना, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी विल एलॉबरेट ऑन दिस measurement model where there is a relationship between the latent variables and indicators. Latent variable and indicators. मेजरमेंट मॉडल में क्या बताया था मैंने आपको? जहां पर लेटेंट वेरिएबल में इंडिकेटर के साथ रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज मेजरमेंट वेरिएबल. यही था ना हमारा मेजरमेंट मॉडल, यही था. ओके. रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल क्या होता है? हमारे आगे शायद नहीं, ठीक है. फिर रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल. रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल indicators are highly correlated, interchangeable and requires reliability and validity test. अरे sorry. इंडिकेटर्स है, ये मेजरमेंट मॉडल है, रिफ्लेक्टिव है, एंड दीज इंडिकेटर्स आर हाईली कोरिलेटेड. हाईली कोरिलेटेड कैसे? क्योंकि ये एक्सप्लेन करेंगे. से सपोज मैं आपसे आइटम्स है ना, वेयर यू आर आस्किंग समथिंग, है ना, टू प्रिडिक्ट सम बिहेवियर. लाइक हमने जैसे एग्जांपल लिया था परचेज बिहेवियर ऑफ मोबाइल. परचेज बिहेवियर ऑफ मोबाइल की बात कर रहे हैं और आपने वहां क्वेश्चंस लिखे, आइटम्स लिखे टू मेजर परचेज बिहेवियर, और साथ में एक आपने आइटम उसमें पूछा कि पुष्पा मूवी आपको कैसी लगी, पुष्पा 2, हाउ डू यू लाइक पुष्पा मूवी, राइट? आप परचेज बिहेवियर पूछ रहे थे, उसमें आपने मूवी का पूछा, या आपने पूछा कि डू यू लाइक टू हैव बर्गर और पिज्जा. तो इज दैट रिलेटेड टू परचेज बिहेवियर ऑफ मोबाइल? नॉट रिलेटेड, राइट? तो जो आइटम्स हैं आपके, ये हाईली को रिलेटेड होने चाहिए. ऑल्दो जो आपको क्रॉनबेक अल्फा मिलेगा, जो क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू मिलेगी, वो आपको गुड ही मिलेगी, 0.6 से ऊपर ही मिलेगी. क्यों? क्योंकि उसने अपना परचेज बिहेवियर बता रहा है, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के. ये फर्दर टेस्ट होगा, जब आप कंफर्मेटरी में टेस्ट करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा. लेकिन रिलायबिलिटी उसकी आएगी कि आप परचेज बिहेवियर पूछ रहे हो ना, तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं पिज्जा या बर्गर खरीदना पसंद करता हूँ, या मुझे पुष्पा मूवी, क्योंकि वहां रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, आपका स्पर है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रिस्पॉन्स विल बी मेजर्ड. वहां पे उसकी रिलायबिलिटी तो आएगी, बट इससे आप उसका प्राइस नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. तो जब आप प्राइस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइस हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं सम इंडिकेटर्स P1, P2, P3, P6, राइट? P1 is explain, P1 is about प्राइस उसका कम है, प्राइस यदि डील पे रहेगा तो आप लोगे, या फिर ऐसे देयर आर सम स्टेटमेंट. और उसी के बीच में मैं आपसे पूछ लूं इसमें कि मूवी पुष्पा कैसी थी, so it is not related, it is not closely related, which is explaining that particular variable, right? तो वैलिडिटी नहीं आएगी, रिलायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसने रिलायबल है ना, आपका रिस्पॉन्स रिलायबल है, उसने रिस्पॉन्स तो दिया, पर वैलिडिटी नहीं आएगी, राइट? वैलिड नहीं है वो क्वेश्चन, दैट इज नॉट वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. वो उसको पुष्पा मूवी पसंद है, उसने बताया, या उसको अच्छी लगी उसने बताया, या उसको बर्गर पिज्जा भी पसंद है उसने बताया, लेकिन क्या वो उस परचेज मोबाइल परचेज बिहेवियर से रिलेटेड है? नहीं. तो वैलिडिटी नहीं आएगी, बट रिलायबिलिटी, यू विल गेट द रिलायबिलिटी. ओके. हाँ, इसमें दो तरह की रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल. दो तरह की रिलायबिलिटी और दो टेस्ट होते हैं आपके वैलिडिटी में, राइट? रिफ्लेक्टिव मेजर में यू हैव टू परफॉर्म 4 टेस्ट. फर्स्ट, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, सेकंड, कंपोजिट रिलायबिलिटी, थर्ड, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, फोर्थ, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. ठीक है, 4 टेस्ट यू नीड फॉर रिफ्लेक्टिव मॉडल्स. पहला हो गया इंडिकेटर रिलायबिलिटी. इंडिकेटर रिलायबिलिटी कैसे देखते हैं मैं बता देती हूँ. इंडिकेटर रिलायबिलिटी मतलब समझ आ गया?
इंडिकेटर कितने रिलायबल हैं टू एक्सप्लेन दैट लेटेंट वेरिएबल, क्योंकि वो मल्टीकुलरिटी वहां होगी, क्योंकि हमने कहा हाईली कोरिलेटेड है टू एक्सप्लेन, उनको एक जैसा ही बनना पड़ेगा ना टू एक्सप्लेन। जैसे देयर में बी ग्रुप्स, है ना, आपके क्लासरूम है उसमें कुछ कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं ना लाइकली माइंडेड। तो लाइकली माइंडेड कैसे समझते हैं आप? जो बहुत क्लोजली आपके कुछ कुछ ट्रेड से रिलेटेड हो रहे हैं, तो लाइकली माइंडेड एक ग्रुप हो जाता है। दूसरा, कई सारे ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं ना जिससे आपकी वाइब मैच होती है, आप उनके साथ में ज्यादा रहते हो बजाय दूसरे किसी और के साथ में, right? कभी कुछ ऐसा पड़ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज यू जनरली बी देयर जहां पे आपको आपके लाइकली माइंडेड या आपकी वाइब्स मैच हो रही है। ऐसे ही इंडिकेटर्स जो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड मतलब स्टे करेंगे ना, क्लोजली रिलेटेड होंगे तभी एक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो हम यहाँ मल्टीकुलरिटी तो देखना ही नहीं, क्योंकि हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं उनको, राइट। हमें इसका क्या देखना, आइटम की इंडिकेटर रिलायबिलिटी। इंडिकेटर रिलायबिलिटी देखने के लिए वी हैव ये 3। तो मुझे इसमें, मैं बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं कर रही हूँ इसको, आई थिंक ये आपको उतना समझ में आ जाएगा। नाउ विल टेक कोवेरिएंस, है ना, कोवेरिएंस लेंगे हम इसमें, कोरिलेशन और कुछ रिलेशन बचा, सारे रिलेशन हो गए आपस में। यदि मैं इसको थोड़ा सजा दूं तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये इससे ये इससे ये इससे रिलेटेड है ना। विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डेकोरेशन। तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल पता है, एक ये प्राइस है, दूसरा लोकेशन है, और ये स्टोर पैट्रोनेज है। जो ये तीनों अभी हम इनका लोडिंग देख रहे हैं, तो आपको कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कह सकते हो आप। इसको देखने के लिए अभी आप रन करेंगे फाइल को। एरर आ गया, एरर क्या कह रहा है? अच्छा, फाइल रीडिंग कर पा रहे हो, ओके। ये मैंने ये नहीं था, यही था, ओके, राइट। विल रन, एवरीथिंग इज डन, अदरवाइज तो फाइल रन हो गई एंड वी गॉट रिजल्ट्स। तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट्स देखेंगे वो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट देखेंगे, ठीक है। ये लाल वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगे, और ये ग्रीन वाला सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने मॉडल बनाया है वो आ जाएगा। अरे भाई सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। एंड दिस इज योर लोडिंग्स। अब लोडिंग्स जो है, आपको क्या देखना है ना, इंडिकेटर रिलायबिलिटी। इंडिकेटर रिलायबिलिटी का क्या रूल है? इंडिकेटर रिलायबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0.04 and if it is greater than 0.07 then it is perfect. इंडिकेटर कब परफेक्ट माना जाएगा? जब वो 0.7 से ऊपर की वैल्यू दिखाएगा तो वो परफेक्ट हो गया, क्योंकि आप कहेंगे कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है उसको, राइट। नाउ हमने रूल देख लिया। इंडिकेटर रिलायबिलिटी आप कैसे देखोगे अब इसमें? इंडिकेटर रिलायबिलिटी इज स्क्वायर ऑफ लोडिंग। लोडिंग क्या है आपकी? ये जो आपको नंबर दिख रहा है 0.70, 0.74, 0.65, ये थोड़ा सा मेसी सा है यहाँ पे, पर दिख रहा है, आई थिंक इट इज विजिबल। और आप उसको आउटपुट में भी देख सकते हो। क्वेरी भी है वो भी। एक सेकेंड, हमने आप पे स्टैंडर्डाइज वेट लिया, स्टैंडर्डाइज वेट है ये। स्टैंडर्डाइज वेट में आपने प्राइस का देख रहे थे लोडिंग, ये लोडिंग है 0.065, 0.739 एंड देन
बस यही है ना, हाँ 0.698. नाउ स्क्वायर ऑफ दिस विल बी इंडिकेटर रिलायबिलिटी. आपको इंडिकेटर की रिलायबिलिटी निकालनी है तो लोडिंग का आप स्क्वायर कर लीजिए. करके देखिए आप लोडिंग का स्क्वायर 0.739. हाँ ये रहा नाम प्राइस का, इसमें कम आया है. जो इसमें अभी हमें दिखा रहा है 0.70 या 0.74 का स्क्वायर करिए, कितना आया, स्क्वायर करिए. नहीं कर रहा, अरे 0.74 इंटू 0.74 कितना कितना आया वैल्यू, 0.52, 0.54, 0.04. हमारा रूल क्या था इंडिकेटर रिलायबिलिटी का, यदि 0.04 से ऊपर वैल्यू है तो ये रिलायबल है, राइट. तो हमारा रूल तो इससे मैच कर लिया. डेटा मेरे पास रफ है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट डेटा, पर रफ डेटा के साथ ही हमारा उतना एब्सोल्यूट नहीं आया, 0.7 के ऊपर नहीं आया, बट 0.04 के ऊपर है. दैट मीन्स इट इज एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर. आप इंडिकेटर वैलिडिटी निकालना आ गया, सॉरी इंडिकेटर रिलायबिलिटी. हाँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं आपको कंसेप्चुअली बता रही हूँ, फंडामेंटल्स बता रही हूँ. जो इसको सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है, सबके पास डेटा फाइल होगी, सब अपना रन करके देखेंगे, सब और इवन रनिंग दिस सॉफ्टवेयर में आप जो भी डेटा डालेंगे वो आपको आउटपुट दे देगा. तो डोंट वरी अबाउट उससे डरना नहीं है सॉफ्टवेयर से, और डोंट वरी अबाउट दी सॉफ्टवेयर, वो तो बहुत जल्दी आ जाता है. उसको करना क्या होता है, उसको सिर्फ आपको डेटा फाइल देनी होती है, और फिर आप जो जो रिलेशन बताएंगे उनकी वैल्यू दे देगा आपको. उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. मेन थिंग इज व्हाट, मेन थिंग इज हाउ टू इंटरप्रेट. फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. हम जो भी रन कर रहे हैं उसमें हमें क्या देखना है, क्या मेजर करना है, व्हाट यू नीड टू मेजर, व्हाट यू नीड टू सी, व्हाट यू नीड टू चेक. this is only you have to understand. And what is the value, मतलब why you are checking this, why you require this. इसलिए हमें ये कुछ फंडामेंटल्स है which you need to understand. यदि हम मेजरमेंट मॉडल देख रहे हैं, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम मॉडल, तो आप जब रिसर्च पेपर पब्लिश करने जाएंगे, दैट रिसर्च पेपर यू हैव इज इट क्लियर, जो भी आपको बता रही हूँ आपको समझ आ रहे हैं, फंडामेंटल समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं. किसका डाउट है वो. आपको बता देता हूँ.
दिख रहा है? दिख रहा है पीपीटी, विजिबल है? ओके, जिसका भी डाउट है वो, आई डोंट नो whose doubt it is about the variable or about the construct. So this store patronage is dependent variable. It is dependent on the location, choice of location, and the price. It has been perceived that if the location is nearby, the chances of selecting the particular store high, क्योंकि आपको लगता है पास में है, जाके हम अपना सामान ले लेते हैं, तो patronage behavior will be choice and then will lead to patronage behavior. So the more time you will go to a single store if it is near to you. Or the other perception is price may affect the patronage behavior. If you went there first time to the store and you find prices are high, will you go again? No. So this is theoretical, based on theory that price यदि compatible होंगे या low होंगे तो patronage का बढ़ जाएगा. On those basis, I have taken two variables, right? Price and location. These are independent variables which are affecting the store patronage behavior of the customer, right? So we here in this model we are checking the effect of two construct, two latent variable, price and location, on the store patronage, the other construct, right? So I hope it is clear. Now you ask. Yeah. Once you collect the whole the data without even checking what results, whether your item is consistent or not, whether your items are or indicators are reliable or not, and you will collect the data, what the result you will get. You have to do this. Huh. Like the indicators are showing the value 0.7, 0.7. But we need to do the squaring of this for indicator reliability. It is provided by the software, or you need to do it? You need to do it. हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि आप इंडिकेटर रिलायबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो, और अदरवाइज आप लोडिंग दिख रहा है ना? लोडिंग, लोडिंग. So this is square of loading. Indicator reliability is square of loading. ये loading है उसपे. We have this in mind. Can we picturize this and show it? Because EFA, once we are doing the first stage of data collection, we can do it. In files, Yeah, EFA, post EFA, you can run confirmatory factor analysis. If in EFA, your items, what you have taken, in EFA, what you do, you divide, it is component matrix you get. You have n number of statement. You will reduce in dimensions. And means few statements will explain one construct, few will explain another construct. So you will get components in EFA. Like आपने trust लिया, आपने ability लिया, नहीं names कैसे? You will only have these items, yeah, and the items will fall in one component. Then you have to check what those items were explaining, and then you can name those. Name it. Now you got the loading from EFA, that these are the indicators which are having good explaining nicely to the particular component, है ना? उनको लेके फिर you will go to confirmatory factor analysis whether there is a reliability and validity or not. नहीं, EFA में तो आपने component define किया ना, you reduced your dimensions. You had a number of statements, right? आपकी स्टडी से आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्ट मिल रहे होंगे, तो उनको डिफाइन करने के लिए you have chosen some statements, right? Indicators लिए. तो आपके पास 72 indicators हैं. Those 72 indicators will reduced into some components.
will be explaining something ना, 5 और 4 will be explaining one component. अब फिर उसके बाद next 4 और 5 will be explaining another component. तो उनको आप नेम कर दोगे. There you got construct and the indicators, right? EFA में construct मिल गया, indicator मिल गया. Now confirmatory factor analysis. You will go for confirmatory analysis. When you will go for confirmatory factor analysis, you will get models, measurement models. From the measurement model, you have to check 4 चीजें. क्या? कौन कौन सी 4 चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी? Indicator reliability, composite reliability, convergent validity and discriminant validity. ये 4 चीजें you need to check. आप कुछ भी मॉडल बना रहे हैं, है ना, आप किसी में भी मॉडल बना रहे हैं, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आपको यू नीड टू चेक. ईदर योर सॉफ्टवेयर इज एक्सप्लेनिंग इट लाइक पीएलएस, वो आपको एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्ट करके देता है. यू विल गेट एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्शन इन पीएलएस. एसपीएसएस में नहीं मिलता. दिस वैल्यू यू हैव टू कंप्यूट, यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपको खुद ही कंप्यूट करके निकालनी पड़ती है, बट आपको पीएलएस दे देता है. So these are some differences, you know. कहीं आप, but you need to check few things which are very required. क्यों? आपने मॉडल बना दिया एंड मॉडल बना के I can show you n number of things. ना मॉडल लेकर आ जाते हैं, ये मॉडल है मैडम, इसको आप रन कर दो. स्पेस वो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में इसको वैलिडेट कर दो. बट वैलिडेट कैसे कर दो? आपकी लोडिंग्स भी तो वैसी आनी चाहिए. हाउ मच यू विल मैनिपुलेट योर डेटा. So this requires actually data screening भी require होती है. We'll do that also. जो fundamental things है before running, मतलब आप वैलिडेट करने के पहले कुछ चीजें हैं जो आपको चेक करनी पड़ेंगी. That we'll do. तो हमने क्या निकाल लिया? इंडिकेटर रिलायबिलिटी चेक कर ली. समझ आ गया इंडिकेटर रिलायबिलिटी? इट इज चेक्ड. क्यों करते हैं ये भी समझ आ गया? Being scholar, now you know that if I am going to make any construct, I have to check indicator reliability. And how I get this? Good. As you wish. मेरे पास तो बहुत है. तो यहाँ कवर कर खत्म कर, तो फिर बहुत सारा रह जाएगा ना मेरा. आगे वाले सेशंस में भी काफी सारी चीजें रहेंगी कि वापस आएंगे. As you wish. You ask your audience whether they want to do this or not. I think. See, what I have to cover is in measurement model. अभी हमने indicator reliability निकाला है, composite reliability निकालना है. We have to compute. We have to measure this. Construct validity, convergent validity, and discriminant validity test आपको करना है. And then further I have formative measurement, जहाँ पे formative जो होता है ना, जिसको हम बोल रहे थे inter model, वहाँ पे you only have to check 2 things. What? First is multicollinearity and another is convergent validity. तो multicollinearity क्यों? क्योंकि हमारे 2 कंस्ट्रक्ट है ना अलग अलग, तो वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए. हाउ वहां पे कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ दीज आर डिफरेंट एंटिटीज ना. उनको मेजर कर रहे हैं जो इंडिकेटर्स, वो हो सकते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, उनमें हो सकती है, बट द कंस्ट्रक्ट व्हिच आर एक्सोजेनियस वेरिएबल शुड नॉट बी हैविंग मल्टीकोलिनियरिटी. ये देखना है. अनकन्वर्जेंट वैलिडिटी, हाउ क्लोज द कंस्ट्रक्ट्स आर, ये 2 चीजें हमें देखनी होती है. तो should I move forward or should I stop? What all I have is not much, only these things, you know. It is I don't know if we have to break, we can break. We can continue it tomorrow, no issues. Or if you want me to do, we'll do this. Okay. So yeah, we are stopping till indicator reliability. We have to do composite reliability, we have to do construct validity, and then multicollinearity, how to check multicollinearity, then data cleaning. Wait, whether I put data screening.
नहीं, एक आइटम को कैसे करेंगे? प्राइस के आइटम, प्राइस के इंडिकेटर को लोकेशन के इंडिकेटर के साथ मैच नहीं कर सकते। वो वही वाली बात हुई ना, मल्टीकुलरिटी नहीं, इररिलेवेंट, irrelevant to that particular variable. There's one question in the chat. It says constructs which are exogenous variables should not have multi-coordinate. नहीं, कंस्ट्रक्ट, हाँ, जो कंस्ट्रक्ट हैं which are having impact when you are checking the inner model, when you are testing the inner model, that time, अच्छा, आप लोग यदि थोड़ा सा है ना साइलेंस मेंटेन करेंगे तो probably I can explain this question and then we'll wind up, right? तो the question was the construct जो हमने लिए हैं exogenous variable should not have multicollinearity. Yes, they should not have multicollinearity. यदि उनमें multicollinearity होगी, मतलब वो close होंगे, तो वो उनका impact जो होगा that will be affected. तो मल्टीकुलरिटी एक्सोजीनियस वेरिएबल के बीच में नहीं होनी चाहिए, या आप बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मल्टीकुलरिटी नहीं होनी चाहिए व्हेन वी आर चेकिंग द इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके बीच में मल्टीकुलरिटी नहीं होनी चाहिए। और कुछ? Taking an IV and a DV, and there is no theory that proves that there is any relationship between IV and DV. So how to go about that? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्योरी शुड बी देयर टू प्रूव दैट देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन. दिस एग्जिस्ट एंड देयर इज सम रिलेशन. यदि आपका एक कंस्ट्रक्ट के लिए थ्योरी है, दूसरे कंस्ट्रक्ट के लिए भी थ्योरी है, यू हैव टेकन दोस कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द थ्योरी, you can check the relationship. But if you are making a new construct, like purchase behavior of the mobile can be affected by the behavior of watching movies, तो एक नया कंस्ट्रक्ट आप डेवलप कर रहे हो ना, तो कंस्ट्रक्ट ही नया डेवलप कर रहे हो, in that case you have to go for PLS. एक हाँ, वो तो हम आगे पढ़ेंगे. Related to this. हाँ. If we are developing a construct, we have to go for PLS. तो आप जो कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहे हो उसमें पहले आपको फैक्टर, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस लगाओगे, आप अपने कंपोनेंट डिफाइन कर लोगे, यू हैव टू डिफाइन कंपोनेंट, पोस्ट दैट आप पीएलएस से करेंगे. आप इस सीबी एसईएम से नहीं करेंगे. कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग विल नॉट बी अप्लाइड ऑन दैट, जहां थ्योरी नहीं है. Where the evidence of the theory are there, then only आप CB based structural equation modeling use करेंगे. Otherwise आप स्मार्ट पीएलएस यूज करिए, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन पैरामीट्रिक डेटा को भी सपोर्ट करता है. Whereas CB बेस्ड जो आपका स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है वो पैरामीट्रिक डेटा को ही सपोर्ट करता है. वहां पे आपको यूज करना पड़ता है पैरामीट्रिक डेटा और कॉन्टिन्यूअस डेटा. स्केल पे आपका डेटा होना चाहिए, तो इसलिए आपको उस समय पीएलएस पे जाना है. प्रोबेबली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे उनको ज्यादा ये नहीं कैच कर पा रहे होंगे जो भी मैं बोल रही हूँ, बट मे बी जो अपर लेवल होंगे सेकेंड और थर्ड ईयर, मे बी दे आर गेटिंग. रिफ्लेक्टिव मॉडल मैंने आपको बताया था. रिफ्लेक्टिव मॉडल ऐसे समझने के लिए जिस कंस्ट्रक्ट लेटेंट वेरिएबल जो आपने लिया है उससे जो एरोज निकल रहे हैं इंडिकेटर की तरफ, वो रिफ्लेक्टिव मॉडल है. दैट इज रिफ्लेक्टिव मॉडल, जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं एरो इंडिकेट कर रहे हैं टू दी अदर साइड, वो रिफ्लेक्टिव मॉडल है. फॉर्मेटिव मॉडल वेयर द कंस्ट्रक्ट आर फॉर्मिंग वन मॉडल, जो हम स्ट्रक्चरल मॉडल कह रहे हैं. When we are missing two the relationship, then which stance is best? CB based, covariance based structural equation modeling if your construct are based on theory. If you have taken the support of any theory कि इस रिसर्च पेपर में या इस रिसर्च में इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को उन्होंने टेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कंस्ट्रक्ट या सारे वेरिएबल एक ही पेपर से लेने. आप अलग अलग पेपर से अलग अलग सेटिंग से आप अपने वेरिएबल्स ले सकते हैं, बट देयर विल बी सपोर्ट ऑन दैट वेरिएबल टू दी रिसर्च पेपर कि वहां पे उन्होंने वो यूज किया. बट जब आप वो कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं, जो वेरिएबल ले रहे हैं, उसके इंडिकेटर्स आपको वही लेने पड़ेंगे.
तभी तो वो कंस्ट्रक्ट हुआ ना, प्रॉपर कंस्ट्रक्ट आपको वहां से लेना पड़ेगा। तो आप अलग अलग थ्योरी बेस्ड कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं, तो आपको सीबी बेस्ड, कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज करनी पड़ेगी। अब सीबी बेस्ड कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या होता है बताओ? कोवेरियंस क्या होता है? व्हाट इज कोवेरियंस? हम पढ़ रहे हैं ना। I was assuming that you all know this. When you want to know that covariance based structural equation modeling better है या SmartPLS better है, तो आपको covariance पता होना चाहिए. You should know covariance. What is variance? Covariance क्या होता है? कोई ऑनलाइन में बता दे. What is variance? What is covariance? तब तो हम इससे उसके ऊपर जाएंगे. मतलब हमारा फर्स्ट जो हमारा क्लास है शायद इन्हीं फंडामेंटल्स पे खत्म हो जाएगा. व्हाट इज वेरिएंस आप लोगों के लिए होमवर्क है फॉर टुमारो. आप पढ़ेंगे व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज कोवेरिएंस, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज कॉजेशन. हम कल पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द अदर थिंग. और फिर हम डेटा स्क्रीनिंग कैसे करते हैं टू यूज दैट डेटा इन स्ट्रक्चरल. आपको डेटा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में यूज करना है तो पहले उसको स्क्रीन आउट करना पड़ता है, पहले उसको क्लीन करना पड़ता है, तभी वो लेता है. मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी. जब मैंने क्लीन नहीं किया तो व्हाट एरर इज. यदि आपका डेटा क्लीन नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर एरर देगा. इसलिए आपको डेटा क्लीन करने के बाद, स्क्रीन करने के बाद ही यूज कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो यू ऑल हैव होमवर्क. कोरिलेशन क्या है, कोवेरियंस क्या है, वेरिएंस क्या है, कॉजेशन क्या है ना. और फिर आप ही लोग मुझे बताएंगे कि कोवेरियंस वर्सेस कोरिलेशन, कोवेरियंस वर्सेस वेरिएशन और कॉजेशन. फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑन टेस्टिंग और अदर फंडामेंटल्स. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. The rest of things we'll take tomorrow, जहां पे हम मल्टीकुलरिटी चेक करेंगे और अदर reliability and validity and yes. We'll continue with this PPT only and don't worry about the PPT. I'll give to your organizers. I'll continue with this PPT. I can even continue with the other things also. If you want to continue with this only, we will do this. If you want to continue with something else, we can start with that also. यदि आपको सॉफ्टवेयर करना सीखना है तो हम कल वो भी कर सकते हैं. आपको कंसेप्ट सीखना है तो हम उस पर शुरू कर सकते हैं. It all depends on you. क्योंकि सॉफ्टवेयर रन करना इज नॉट अ बिग थिंग. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.